So in our last lecture, we have completed with the chapter which was being called to be as application of definite integration. And while studying but with the term application of definite integration, we have learned how to find the area between the curve and axis. After completing that chapter, now we are proceeding with the last chapter of our syllabus. Last chapter of our syllabus, which has been called to be as the differential equations and applications. Differential equations and applications. However, the chapter is divided in two parts. The first part is a differential equation, and the second part is called to be as applications. So when I'm talking about the term applications, that means we are going to study about the areas where we can make the use of a differential equation. पर यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक टर्म्स है ना, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है. वी हैव टू रिवाइज दैट बेसिक टर्मिनोलॉजीज बराबर है. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम बेसिक रिवीजन. चलो सब लोग रेडी? हाँ, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. विल स्टार्ट विद सम बेसिक फंडामेंटल्स. let let y is equal to f of x let y is equal to f of x. So in this given function, no, this is only the revision. हाँ Hare Krishna, ये सिर्फ revision है, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पर. So in this given function, y is equal to f of x. We have come across with the two variables. We have come across with the two variables, and that two variables, they were none other than they were x and y. That two variables, what they were x and y. Out of which x is called to be as independent variable. I repeat, x is called to be as independent variable, and y is called to be as a dependent variable. So एक बार फिर से repeat करो. What is x is called to be as a independent variable, and what y is called to be as a dependent variable. बराबर. So in this given function, what we have learned, x is a variable. What is x? Is a variable which can take any of the values, without any restrictions. X is a variable which can take any of the values without any restrictions. X के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है. बराबर. x अपने मर्जी से जो चाहे वो वैल्यू ले सकता है. बराबर. बट क्या y अपने मर्जी से ऐसे कोई भी वैल्यू ले पाएगा? नहीं क्योंकि y is a variable which is expressed in the form of x. बराबर. y is a variable
which is being expressed in the form of x. So y will always depend upon the values of x. Whatever the values, whatever the values which are being taken by the x, whatever the values which are being taken by the x, depending upon which y will get its value. बराबर है? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? So therefore, what is y is called to be as a dependent variable. ये सब पॉइंट्स बड़ा नोट कर लो, जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा बड़ा तो वहां पे मुझे इसकी सब की जरूरत पड़ेगी बड़ा. बाद में ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर आपने कभी हम लोग को बताया नहीं रहा कि what is independent variable, what is dependent variable. Here you can make a note of that where where what is x is the meaning of the term x is independent variable यानी याद रखो सब लोग बड़ा. And what is y is a dependent variable बड़ा. करेक्ट है? और डेरिवेटिव्स में बड़ा हम लोग ने सीखा था कि नहीं बड़ा? हाउ टू डिफरेंशिएट y with respect to x बराबर. How to differentiate y with respect to x means we have learned how to differentiate a dependent variable with respect to our independent variable. That means we have learned how to find the value of dy upon dx. How to find the value of dy upon dx. चलो तो यहाँ पे बड़ा in the chapter differential equation, but it is compulsory that we have to revise the fundamentals of derivatives. We should be thorough with the formulas of derivatives. तो एक बार चलो अगली फटाफट बड़ा हाँ फॉर्मूलाज को बड़ा रिवाइज करें सब लोग. बड़ा पेन वगैरह नीचे रख दो सब और फटाफट बड़ा मेरे फॉर्मूलाज की ओर बड़ा आंसर दो. स्टार्ट. व्हाट इज a derivative of a constant? Zero. Very good. What is the derivative of x raised to n? Correct. N into x raised to n minus 1. What is the derivative of x is? What is the derivative of root x? एकदम फटाफट बड़ा टाइप करो. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. चलो डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. -1/x square. Derivative of a raised to x is
derivative of e raised to x is derivative of log x is 1/x। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि डेरिवेटिव्स के बड़ा सारे के सारे जो फॉर्मूलाज थे वो सिर्फ किसके लिए थे? एक्स के लिए थे। बट क्या यही फॉर्मूलाज हम लोग बड़ा एक्स के बदले किसी और के लिए बड़ा यूज कर सकते हैं? यस, करो करो बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला में बड़ा जिधर जिधर मुझे पहले कौन दिखता था? एक्स। अब ये बड़ा एक्स एक्स रहेगा नहीं बड़ा, है ना? और एक्स के बदले बड़ा तुम लोग ने जिसके लिए फॉर्मूला यूज किया तुम्हें वो टर्म दिखाई देगा बड़ा, बराबर है। बट यहाँ पे बड़ा जो फॉर्मूला सिर्फ एक्स के लिए था वो हम लोग ने बड़ा यूज कर दिया किसी और के लिए। बताओ ये हम लोग ने बड़ा कौन सा काम कर दिया? अच्छा काम, बुरा काम। बुरा काम बड़ा, और बुरा काम करोगे बड़ा तो भरना पड़ेगा। पेनल्टी बड़ा, और पेनल्टी कैसे भरना है तुम लोग को पता है? जिसके लिए बड़ा फॉर्मूला यूज किया उसका फिर से बड़ा डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, बराबर। अच्छा, और ये यस, करेक्ट बड़ा। अब आगे देखो फटाफट बड़ा, मैंने तुम लोग को बड़ा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सिखाया था, याद है लास्ट में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव? If the original function is y is equal to f of x, and if we differentiate the function for one time, so by differentiating the function for one time, what we get? Very good, bro. We obtain the first order derivative, dy upon dx, which is equal to f dash x। सब लोग बड़ा याद रखना बड़ा, dy upon dx, which is equal to f dash x, is called to be as the first order derivative, बराबर। अच्छा, if we differentiate the first order derivative, we obtain the second order derivative, and the second order derivative it has been denoted by it has been denoted by d2y upon dx square, which is equal to f double dash x। हाँ, अब ये सब बड़ा यहाँ पे ध्यान में रखना, इसको हम लोग बड़ा यूज करेंगे। इफ द ओरिजिनल फंक्शन इज बड़ा y, बराबर, तो बड़ा डिफरेंशिएट करके हम लोग को जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मिलेगा ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, that first order derivative, it will be denoted by y dash, it will be denoted by y dash, बराबर, सिंगल डैश है ना। the second order derivative it will be denoted by using y double dash। और मुझे बताओ, when we talk about the term third order derivative,
तो बेटा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर है बेटा, इट विल बी डिनोटेड बाय y ट्रिपल डैश, याद रखोगे बेटा तुम लोग। चलो चलो एनी डाउट? अब हम लोग स्टार्ट करें बेटा। नोटेशन में बड़ा यूज हो सकता है, हरे कृष्ण। वो टाइम पे बड़ा लगना नहीं चाहिए कि सर मैं बताया नहीं हम लोग को। So the name of the chapter which we are going to start is differential equation, बराबर, differential equation। तो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिखा दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बड़ा सिखा दिया, डेरिवेटिव्स के भी कंसेप्ट शेयर कर दिया, और इक्वेशन का मतलब तुम्हें पता है ना, the two equal expression is called to be as इक्वेशन, है ना। दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर तुम्हें इज इक्वल टू साइन दिखाई दे, कौन सा साइन दिखाई दे, इज इक्वल टू साइन, तो इट इज कॉल्ड टू बी एज इक्वेशन, बराबर है। तो ये देखो, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, तो सबसे पहले उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। भाई देख, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन मींस। तो देख, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है बेटा यहाँ पे? वाई। मैंने सिखाया था ना सब लोग को, सब लोग बड़ा पार्टिसिपेट करो मुझे। फॉर्म ऑफ बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स बेटा, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to the independent variable, है ना। एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ बोला, इसका मतलब बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ, और उसमें बेटा कौन कौन आ गया डेरिवेटिव्स में? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। दे आर ऑल कॉल्ड टू बी एज डेरिवेटिव्स। what they are all called to be as derivatives, बराबर। derivatives of a dependent variable, derivatives of a dependent variable with respect to the independent variable। that means here we are talking about the derivative of y with respect to x, and that derivative of y with respect to x, either it can be in the form of dy upon dx, or it can be in the form of d2y upon dx square, or it can be in the form of d3y upon dx cube, is called to be as a differential equation, बराबर है। तो तुम लोग ने बड़ा हमेशा नॉर्मल इक्वेशन को तो देखा ही होगा बेटा। जो नॉर्मल जो इक्वेशंस होते हैं, वो इक्वेशन में बड़ा हमेशा क्या होता है? वी सी ओनली द वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई, बराबर है। मैट्राइसिस में भी हम लोग ने बड़ा इक्वेशन सॉल्व किए थे ना बच्चे लोग, किए थे ना हम लोग ने सॉल्व। तो उसमें भी सिर्फ क्या था बड़ा, एक्स। बट नाउ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल बोला, इसका मतलब क्या होगा बड़ा? in this given equation, apart from x and y, apart from x and y, we will see that there are the terms, what there are the terms which are consisting of the derivatives like dy upon dx, d2y upon dx square, d3y upon dx cube, समझा? चलो अब वन बाय वन see the examples of
एक